Good morning, dear children. Today in GK we will do activity 3, lesson number 10 and revision exercise 2. Very good morning to all my dear students. Today in general knowledge book 2 we will be doing a new lesson. So everyone can open your textbooks on page number 14. This is your activity 3, way to the playground. Now here you can see there are three children who are standing here, and this is the way. We have to find the way so that these children can reach the playground that is at the end of the page. You can see at the end here, this is the playground, and these children have to find the way to reach this playground. This is the rocky way, so they are not able to find the way. We have to help them to find their way. Now let us read what is written here. Follow the table of 4 to help these children, these friends, find their way to the playground. Now what you have to follow? You have to follow the table of 4. So you all remember the table of 4? First, let us say the table of 4. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 six are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36, and 4 tens are 40. So we have to find those numbers only which comes in the table of 4. मतलब हमको 4 के टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं उन्हीं नंबर से हमको ये रास्ता ढूंढना है. So let us start with 4. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 six are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36, and 4 tens are 40. So we have reached the ground over here. So now we have shown our friends the way to reach the ground and they can play here. Now, dear children, we will move on to lesson number 10, which is on page number 15. So, all of you will first write today's date and classwork, that is 25/1/2021, and classwork. Now, what is the name of the lesson? Lesson number 10, find a parking. That means here you can see, as you can see from these pics only, that these are the vehicles, and these vehicles are parked at certain places only, and those places are given a special name. ये जितने भी vehicles इस पेज नंबर 15 के अंदर आपको दिखाए गए हैं, वो सारे vehicles कहीं ना कहीं पर पार्क किए जाते हैं. जैसे कि हम हैं कहीं भी बाहर जाते हैं तो ऐसा पार्किंग का बोर्ड लगा होता है. दैट मीन्स आपके स्कूटर्स है, बाइक्स है, कार है, जो भी व्हीकल आप लेके गए हैं आपको उस एरिया में उसको पार्क करना है. तो नॉर्मल व्हीकल्स तो हम जो है नॉर्मल पार्किंग एरिया में रख देते हैं, लेकिन कुछ व्हीकल्स ऐसे जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं जैसे कि शिप है, एरोप्लेन है, then your train is there, fire engine is there, metro train is there. वो सारे जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल्स होते हैं जो विच कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. मतलब ये बहुत सारे लोगों को ले जाने वाले जो व्हीकल होते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल होते हैं, उनको कहाँ पर पार्क किया जाता है, हमको उनके पार्किंग प्लेसेस बताने हैं. वी हैव टू टेल द नेम ऑफ दोज पार्किंग प्लेसेस वेयर दीज व्हीकल्स आर पार्क्ड. First, we'll read it. There are specific names for the places where these vehicles are parked. Write the correct name from the options at the bottom. That means what you have to do here is you have to write the correct names, and the options are already given here. We are given the clues for all the vehicles that are here. Now, some other common vehicles, that is cycle है, bus है, वो सब तो common है जो हमको पता है. अब हम पहले clues पढ़ेंगे. Clues for you: rickshaw stand, bus depot, anchorage, fire station, then airport apron, metro depot, cycle stand, and train shed and garage. Now we'll start with the first picture. This is your metro train. मेट्रो ट्रेन जो होती है बड़े बड़े सिटीज़ में लोकली पीपल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ की जाती है. जैसे कि बॉम्बे में लोकल ट्रेन होती है, वैसे ही ये सारे लोकल ट्रेन हैं. दिल्ली में भी ऐसे मेट्रोज चलते हैं, और इन द नियर फ्यूचर अहमदाबाद में भी ऐसे मेट्रो ट्रेन्स देखने को मिलेंगे. सो मेट्रो ट्रेन्स का जो पार्किंग प्लेस होता है उसको बोलते हैं मेट्रो डिपोट. दिस इज़ योर शिप. शिप जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो. शिप इज़ पार्क्ड एट द प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज एंकरेज. Next is your aeroplane.
एरोप्लेन एयरपोर्ट के एयरपोर्ट एप्रन या हैंगर भी बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट एप्रन में जो है पार्क किया जाता है। नेक्स्ट इज योर बस, सॉरी ट्रेन। ट्रेन इज पार्क्ड इन ट्रेन शेड। जो भी ट्रेन्स जो होती हैं जो नहीं जा, जिनका डेस्टिनेशन पूरा हो गया होता है, जिनका रूट ख़त्म हो जाता है और उनको नेक्स्ट डे ही जाना होता है, वो सारी ट्रेन्स जो है ट्रेन शेड में जो है वो रहती हैं और नेक्स्ट डे जहाँ जहाँ उनका हो जाना होता है उस रूट पे वो वापस उनके ड्राइवर्स ट्रेन को लेकर जाते हैं। दिस इज़ योर साइकिल which is obviously parked in cycle stand. दिस इज़ योर बस। बस कहाँ पर पार्क होती है? बस डिपोट में। बस स्टेशन पे एक एरिया होता है जहाँ पर जो बस सारी बसेस पार्क होती हैं। दिस इज़ योर फायर इंजन। यू नो व्हाट इज़ अ फायर इंजन? जब कहीं आग लगती है तो हम जो है ना फायर इंजन की गाड़ी को बुलाते हैं और वो उनके उसमें बहुत बड़े बड़े पाइप्स इट इज़ फुल ऑफ वाटर। इसके अंदर जो टैंक होता है उसमें पानी भरा हुआ होता है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ वेरी बिग पाइप एंड दैट विद द हेल्प ऑफ दैट वाटर दे जो फायर दे पुट ऑफ द फायर। जहाँ आग लगी होती है वहाँ आग बुझाते हैं। पर नॉर्मली जो गाड़ियाँ होती हैं उनका जो जहाँ रखी जाती हैं उनको बोलते हैं फायर स्टेशन। नाउ दिस इज़ योर कार। कार इज़ पार्क्ड इन गैराज। दिस इज़ योर रिक्शा। रिक्शा इज़ पार्क्ड इन रिक्शा स्टैंड। So dear children, these are the पार्किंग प्लेसेस फॉर दीज गिवन व्हीकल्स। अब उसके बाद ये जो आपको है ऐसे टेक्स्ट बुक में तो कंप्लीट करना ही है, साथ में नोटबुक में भी आपको लिखना है। आई विल शो यू हाउ टू राइट इट इन द नोटबुक। In the notebook, you have to write like this. First, you will write today's date, classwork, lesson number 10, find us parking. Then you have to write this, name the places these vehicles are parked. This you have to write in your notebook, classwork one time and homework one time. Then you will just simply write the name of the vehicles, metro, metro depot, then ship, anchorage, aeroplane, airport apron, train, train shed, cycle, cycle stand, bus, bus depot, fire engine, fire station, car, garage, rickshaw, rickshaw stand. So this way you have to write it in your notebook 2 times. Now we move on to the revision exercise 2. This is on page number 16. Now here also you are going to write today's date 25/1/2021 and classwork. Now this revision exercise is of the earlier lessons that we have done. Revision exercise 2. Now question number A is answer the following questions. You have to answer the questions. Which city is known as the Pink City of India? Which city is known as the Pink City of India? It is the Jaipur. Jaipur, Jaipur. Which city is known as the Steel City of India? It is Jamshedpur. Which city is known as the City of Joy? It is Kolkata. Then which city is known as the Queen Hill of Stations? Queen of Hill Stations, this is your Ooty. And which city is known as the Sandalwood City? It is Mysuru or Mysore, but presently it is called as Mysuru. Now next is your question number B. Write what the following traffic signs indicate. This also we have already done. So this is your one way. This is your U-turn. Then next is your school ahead. Then this is your no horn and this is your no parking. Question number C, fill in the blanks. This is from the last lesson that we did right now, lesson number 10. A train is parked in a train shed. An aeroplane is parked in an airport apron. A car is parked in a garage. A metro train is parked in a metro depot. And a ship is parked in an anchorage. So this is on page number 16. Now all this also, this revision exercise 2, also you have to write it in your notebook. One time classwork. This you have to write one time only because already we have done these exercises or these lessons in the notebook before that also. So this you will write it in your notebook only one time classwork. So dear children, there are 2 lessons that you have to write it in your notebook. One is your lesson number 10. This you have to write it in your notebook, and then revision exercise 2. This also you have to write it in your notebook. Activity 3, you have to just complete it in your textbook only. So dear children, with this we wrap up of today's GK class. Next time we'll meet with a new lesson. Till then, bye bye.